ओके, सीखना है आपको कि आंसर्स कैसे करने हैं हमको. ओके, आई डोंट थिंक कि दिस इज लैगिंग राइट नाउ. इंटरनेट कनेक्शन इज प्रॉपर. ओके, अभी तक हो रहा होगा मे बी, अभी नहीं हो रहा है. कैन यू एवरीवन कमेंट, लैगिंग कर रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? ओके, बार बार अभी है, अभी बराबर है अभी. ओके सॉरी. ओके, तो आपसे पर्टिकुलर एक एक सबसे सबका एक इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा, और जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो प्रॉब्लम्स मैं आपको इंटरव्यू के बाद बताऊंगा, सो दैट कि आपको इंटरव्यू को लेफ्ट नहीं करना है. मतलब इंटरव्यू देने के बाद सुबोध का आपको सुनना है, संदेश को सुबोध का सुनना है, प्रज्वल को सुजाता का सुनना है, सुजाता को आकाश का सुनना है. सबको एक दूसरे का इंटरव्यू का आंसर सुनना है, कैसे वो दे रहे हैं. साथ ही साथ क्वेश्चन किस किस तरह के मैं पूछ रहा हूँ ये भी आपको समझना है कि अच्छा इस तरह के भी आंसर्स पूछे जा सकते हैं. Okay, so now we'll start your interviews, and definitely I'm going to check your communications, I'm going to check your technical skills, as well as I'm going to check your personality, how you are in the personality, in the sense how you talk, how you make your eye contacts, that everything I'm going to check here. So this is your interview. Now we'll start with this interview. I'm going to start with Sandesh Wani. Sandesh, on your video, and also on your mic. Okay, Sandesh, how are you? Fine, sir. Okay, Sandesh, introduce yourself. My name is Sandesh Dineshwani. I am from Jalgaon, and I studied from JS Rai Suni, Ahmednagar. You studied your study from Ahmednagar, right? Yes, Okay, you pass out year 2020. 2020. After that, you done any works? No, sir. Yes, sir. I work in Aryan Developer Jalgaon as a site junior engineer. Okay, site junior engineer, right? What was your Yes. key responsibilities on this site? I will check. I have check the levels of the beam and the foundation and the line out. Everything I can do it on site. Slab checking and the steel checking bars, diameters of bars and beam dimension. All the measurement I will check it. Okay, what cover we provide for column? 40 sir. Okay, difference between effective length and clear span. Effective length means the diameters of bar, the center of the bar diameter, center of bar diameter, and the column outer, the length between center of bar diameter and column outer cover. Okay, what's your hobbies? Cricket and reading. Cricket and readings. Okay, what is the cricket pitch size? Cricket pitch size. Uh, don't know, sir. Okay, your hobby is reading, right? Right? Yes, yes. Which type of book you like to read? Shamchi and others. Samchi. And others Shamche, yes, and civil engineering books. Okay, Samchi is what? This is book. Yes, yes, sir. Okay, who is the writer of this book? Uh, Give me the summary of this book in one line. Okay, no issue. Sandesh, what technical skills you have? yes, sir. What technical skills you have? This sir, AutoCAD and StatPro and MS Excel, PowerPoint. Okay. What is the file format of MS Excel? Okay. Don't know, sir. Okay. And what is the file format of StatPro? STD. STD Dot or STD. dot STD? Okay.
What is the file format of PowerPoint? Don't know, sir. Okay. Where you want to see yourself after 5 years? Mm, as a as a design engineer. As a design engineer. Okay. Which subject you like most in civil engineering? RCC. RCC you like most. Yes, Okay. sir. What is shear force? Air Force means the Okay. Last question with you. Why should I hire you? because the software skill I have the software skill like the AutoCAD and StatPro, and I will give you better plans and StatPro skills. What is the use of dynamic input command in AutoCAD? Okay. And there are different type of array in AutoCAD. What are the name of that Yes, sir. arrays? Start end. Array. नहीं array polar array, rectangular array and path array. Okay. Great. Nice to meeting with you, Sandesh. I'll give you feedback later. Okay. Try to get your turns. Okay. Yes. Yeah. Next is with Subham Goswami. On your mic and video, we'll start meeting with you. Subham Goswami. Okay. Subham, tell me something about yourself which is not mentioned in your CV. You're not audible. तुम्हारा म्यूट है शायद, चेक करो कनेक्शंस. You're not audible. Yes, right now Hello. this is okay. Yeah. Tell me something about yourself which is not mentioned in your CV. Sir, sorry, question not here. Okay. I said Not able to question. Okay. Yeah. Tell me something about yourself which is not mentioned in your CV. Sir, my CV is like normal because I have 1 year of experience in architecture firm. But my hobbies is like different types of architecture and structural building. Recognize how can you build it, different types of column positions provided. So this is my different hobbies. Okay. Have to see. What's your strength, Subham Goswami? My strength is I have continue work of any type of hard working like means 4 to 5 hours I have working Means continue you are workaholic. workaholic like means different types of when I was in work as a architecture firm as an engineer that time I was working 4 to 5 hours continue to create a submission drawing working drawing. Okay. What's your strength? Sir, my strength is continue work, Continue. not This is any. your weakness. This is your weakness also. This is your strength also. No, sir. My Okay. weakness is like I'm emotional, You are emotional. little bit. Okay, little bit emotional. ब्रेकअप हो गया था क्या? No, Okay. Uh, Shubham, how was your academic in college? You are good students or average or excellent? no, sir. I was like average student. Average student. Presently, I also average student. You are average student. What was your project in college? Means in degree, Yeah. in graduation.
Sir, I have project on a retaining wall structure between difference means RCC structure and gravity wall structure of retaining wall. We have to compare it. Okay, this was your project. RCC Yeah, walls and retaining walls. the retaining walls, retaining Okay, RCC wall. so what was the difference between both? Sir, gravity wall is a all means more concrete provided in gravity structure, and in RCC structure means equilibrium condition to provide steel and concrete also. Okay, difference between frame structure and load bearing structures. In load bearing structure, we have to rest on a slab and directly on wall, and in RCC structure, we have to slab load is provided on a beam and then column and then foundation. What was your pass out year? So my pass out year is my graduation is part of 2019, and after that I have to work in architecture firm in 1 year, small firm like Okay, working. difference between submission drawing and working drawing. Sir, in submission drawing, no, first of all, I would say that in working drawing, all types of dimension, detail dimension, we have to provide in that drawing. And in submission drawing means it was a plan sanctioning process. In submission drawing means elevation, sections, we have to provide proper dimensioning and Okay, this is the only difference. Okay, and okay. what is master drawing? You know about that? Also. Okay, no issue. And right now, what are work you are doing? Like I think you are doing, you are creating the summation drawings, na? In with the architect, right? Oh, yeah, yeah, sir. Summation drawing only, right? Yeah. Okay. What is building by law? So building by law is a one type of rule provided as a government uh, to build a environment in a proper way and to provide the safety of human beings Okay. and overall building. Okay. How many projects you done with architect? I have worked as a project as a 7 How much? work. And also I have worked uh, on a Revit architect Okay. software. Okay. So I have provided 3D drawing also. Okay. So how many? And How this many? is 3D drawing is Yes. Yes. Continue. Continue. 3D drawing. so this is 3D drawing is provided on Inkscape software Okay. for render Render using. work. Okay. So total, how many projects you done approx? To 15, 20 15 to because 20. some work as a go to the site and observing that dimensions are provided is proper way or not. Okay. Great. So And site visit is also mentioned in that. okay. And where is located your current company? No, sir, I am doing a master's in structures, Okay. MIT. You are not doing project. No, sir, I have completed. Okay. You done your internship right I am now. currently doing master in structure. Okay, I thought you are working right now with your masters, but you are not working right now. You're just doing the M Tech, right? No, no, sir. Okay, okay, great. Yeah, yeah, sir. Okay, great. Shubham, why should I hire you? Mm, sir, because I have little bit experience as a structural engineer profile, like what should be the position of column provided. Correct. It's like little bit experience, but I have dedicated that what type of structural work as a big level. So I am excited. So and hardworking. So uh,
That's why you think like I like so much. So okay, great. yeah, sir. Okay, and right now you're doing MTech, and what's your project in MTech? Sir, my project is on a blasting load. When RCC building, G plus 8 RCC building is provided on a blasting load uh, as uh, as analysis on ETAP software. Okay, Is a time history method. okay. Different difference between static analysis and dynamic analysis. You know about that? Yes, sir. Okay, Sir, static analysis means structure is analysis on a stable conditions, and dynamic analysis means structure is analyzed as a vibrating position. Means when it's was earthquake, what's happen in structures like vibrate. So this is the earthquake we check so is earthquake we check in static analysis also. uh, yes, Your answer was right, but you can't mention yeah, earthquake because earthquake is in both conditions. Okay, but in dynamic we use okay. time frequency, and according to time frequency we check the data, but in structure is stable at that time we use Yes, sir. Time and in Excel time and vibration type graph we have to check and okay. then analysis. What's your hobby, Shubham? Sir, my hobby is playing cricket and architecture structure was in a structural point of view. Okay, at your free time what you do? Sir, at my free time, I was working. Means different types of structure watch. Means you don't It's very exciting. you don't like use Facebook or Instagram at your free time? Yes, sir. I also watch, but it's another my hobbies is like watch different types of structures. Okay, great. Nice to meeting with you, Shubham. And this was nice meetings. Thank you, sir. Yeah, wait for your Thank reply. you, thank you. Okay, great, great. And now next is with Rahul Ranjan. On your mic and video, Rahul. Rahul Ranjan. Hello, sir. Hello. How are you, Ryan? Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Okay. Are you in PG? Okay. Are Sorry, you? sir. Okay. There are some. Actually, there is some sound. Yeah, extra noise is coming. Okay. You can take that later. You can off your mic. जास्त बोलत होते बघ माहिती आहे मी जास्त Okay. बोलले ना Right, sir. Okay. थोडक्यात केवढं सांगू तेवढं When you got silence at that time, you can just message me. Okay, Shubham, just off your. Okay, the sound was from Shubham side. I think this is okay with Rahul on your mic. Yes, sir. Okay, yeah, the sound was from Shubham side. Introduce yourself, Rahul. Sir, I am Rahul Ranjan. I have studied my 10th from DAV Public School from my hometown and 12th from BSCB, and I have did my graduation in civil engineering from NSIT Patna. NSIT Patna. Where are you right now? Yes. I am in Patna, sir. Currently, I am in Patna. Okay, you are in Patna and you are working with which company? Sir, actually, I am working as a freelancer with many architects, local architects, and some Okay. local. What type of Yes, work you are doing in architects? sir. Freelancer. Currently I am working as a design engineer, and also I go to sites, and when I am site, I am I work as site engineer. Okay. Yes. So like you are freelancer, but freelancer as Yes, a sir. site engineer or as a design No, engineer? no. As a design engineer, I love to work in office, sir. So I mostly I do design engineer, but to execute the design, sometimes I go to sites. Okay, means you are like you have your own consultancy, you can say. Yeah, sir. I am trying to do something like Okay, that. you're trying to build Yeah. your network and trying to work. Yes. Your pass out Yeah. year I passed in 2019. 19, and after that Yes, you, sir. you never join any I company.
Actually, sir, I have joined a company pre-lockdown. Okay, It is SD Sharma Associates, based associated in Chandigarh. okay. So there I worked for 3 or 4 months, This is in and then Panchkula. yeah, sir, Panchkula, Yeah, I right, know. sir. Yeah. Then this COVID thing happened and everything ruined. Okay, great. Yes. Rahul, where like so right now you're preparing for any company or you want to open your No, own? no, sir. I am not interested to work for someone else. Actually, I have a dream to work for myself from the day one, from when I left my college. Okay, that is very nice Yes, things. Okay, but for yes, everyone, right now, just I just want to recall everyone. Uh, if you want to do something big, try to learn from first. Okay, try to yes, learn sir. from some big companies. Yeah, Okay, yes, and right, sir. which company you mentioned, that is very small company. I know. Got Yes, it? sir. Because I Sir, was actually, SD Sharma is prestigious architect. He worked with Lee Corbuzier and planned whole Chandigarh. exactly. I know. Yes, sir. I was there, and he know Yes, me sir. very well. Okay. Oh, yes, sir. Rahul, what's your hobby? Sir, I love to play piano, and sometimes I used to sing also. Okay. Which song you Yes. like most? I mostly, I sir, I like semi-classical and uh, Okay. more uh, If more like if you're not if you're not a Bollywood fan actually, okay, sir. if you're comfortable, you can just sing one line of your favorite song. Mm, sir, I can sing. If you allow me, I can sing a song like actually this I am very bad at this thing. When A situation is randomly okay. no Surroundings. no random no sir, randomly when I am not actually I am not prepared, random thing happen, then it Any like line, any lines. Just we want to uh, listen you. all right, sir. Fine. Sir, a ghazal, I can sing a ghazal. Uh, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए उसके बाद आए जो अजाब आए आए कुछ अब्र Okay, very something like nice. this. Very good, very nice. Why I'm asking this and why I'm saying you can just sing a song. This is very Yes, sir. important. If any employee is like this, okay, we can like suppose we get any functions for our Yeah. company. So Yes, sir. if any employees there which hobby is playing piano or singing a Yeah. song, okay, that is good for entertainment purpose. Yes, Okay, sir. and that is good skills. Okay, and if you are singer, don't be hesitate. Okay, you can No, no, just no, sing. sir. Yeah. Yes, sir. Okay, Rahul, right now that mean you know Rabbit and AutoCAD also, or how many No, sir. languages? Actually, I haven't used Revit before, but I have learned. I have actually I learned AutoCAD and Stat Pro RCDC myself actually. Okay, Then I thought I could miss something like some knowledge, so I was I joined this class actually, sir, to know something that I could miss or I would be missing. but you are freelancer. As per your like drawings, I can judge you. Yes, You are sir. not good in drafting right now. No, no, sir. I actually I do that. I prepare drawing, but by grace of God, I have a friend who is architect, and he is my best friend. You can say from school days, Okay, and mostly we do things together. And okay, when I am free, I work with more architects. okay. Great. I got it. Your answers. Uh, where you want to see yourself after 5 years? Sir, I
just want to be a good structure engineer, and I just want to prove myself that I have did some good design and some good stuff around me, so Okay. I can see the change. Okay. Nice to Yes, meeting sir. with you, Rahul, and you are Yes, interesting sir. persons. I'll give you your feedbacks later. Okay. Okay, thank you, Okay. thank you, Okay. sir. Okay. Yeah. Next is Akash Dalvi. On your mic and video. Okay. Okay. Hello, sir. Hello, Akash. How are you, sir? I'm good. Tell me something about yourself which is not mentioned in your CV. Okay, sir. Sir, I have not mentioned about the company where I worked before. I have worked in Sir Manuka Store Private Limited in Jaipur. I worked there on AutoCAD. I made sections of beam, uh, taking steel quantity. Uh, that is, Okay. What is cutting length? don't know. You are calculating the quantity, So only the steel quantities steel of only quantity beams. only for beams. Yes, sir. Okay. Difference between ties and stirrups. So ties is which we provide in columns, and stirrups we provide in beams in the horizontal members. Okay. Why we provide crank bar? Uh, Cranked bar. Okay. What is hidden beam? So hidden beam is like a 9 inches depth, 9 inches width, and 6 inches depth. We provide it for the strength. For the strength. Okay. And you know about RERA, right? Yes, sir. What is the full form of RERA? The RERA stands for Real Estate Development and Regulation Act. It is a safeguard interest of home buyers, provide real estate sector with transparency and credibility. Very And well. it was executed in May uh, in 2017. Excellent. Uh, what is building by law? The building by law name suggests it is rules and regulations framed by town planning authorities for the requirement of buildings, ensuring the safety of public through open spaces, minimum size of rooms, height and area limitations are all termed as building bylaws. Minimum size of living room. Yes, minimum sizes of. Minimum size of living rooms. How much living rooms minimum size we can provide? So 10 feet by 12 feet. 10 feet by 12 feet. Okay. What is, okay, just a minute. Uh, what is built up area? So build up area means the area which consists of walls, exterior walls also, and the land in which building is to be built. Okay. What is building line? Building. Building line. Line, line. So I guess building line is in which the buildings is constructed. All the Okay. buildings is constructed. Okay. I'm trying to confuse you. That's why you're confused. Okay. Which is your favorite subject in civil engineering? So my favorite subject is building materials. Building material, BMC. Okay. So tell me, what is the density of RCC? Sorry, yeah. What is the density of RCC? So density of RCC. Uh, so you mean RCC. rebar? No, no. RCC, PCC, RCC. So I guess 25. I guess, or are you sure? 25. Sure, or you are just confused? No, so I guess 25. Okay. What's your hobby? So my hobbies are biking, playing sports such as cricket, volleyball, and kho. Kho. How many players need to play Kho? Okay, sir. 9 players, sir, in each team. 9 players. Okay. And volleyball also, right?
What is Yes, the sir. length of Bollywood pitch? Yes, sir. So 9 meter long, 19 meter long, and 8 meter wide. And net size? The net size, so it is, we basically put 3 meter, 4 meter. Okay. At your free time, what you do? So at my free time, I play cricket. You play cricket. Okay. Yes. What is the height of cricket wicket? Sorry. Cricket wicket size. Okay, so wicket size. Uh, mm, I guess Okay. Who one is, meter okay, yeah, approx. Uh, approx. if your hobby is something, try to know everything about that hobbies. Yes. Got it? Who is your favorite YouTuber? So I recently watched videos of yours only Okay, no, not nowadays. recently. I'm not telling you can just give me my name. I am saying it's not about civil engineering. It's Yes, sir. overall. Who is your favorite YouTuber? No, I sir didn't watch more videos on YouTube, sir. Okay, which app you like most? Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube? What? Which type of So, app? so nowadays I like LinkedIn. LinkedIn you like most? Yeah. Yes, sir. Okay. Why I'm asking these questions? सब लोग सोच रहे होंगे तो this is why I'm asking because I'm trying to judge आकाश कि which type of app he is using, which type of video he is watching, okay, and if he is watching some ideal person's videos, definitely he is doing good. But अगर कुछ ऐसा जैसे कि अभी he can say कि I'm watching Sandeep Maheshwari sir, maybe there is I'm watching because I like to watch Sandeep Maheshwari sir, and there is one Jan, different. So I'm just trying to check Akash personality. That's why I'm asking. Got it? Okay, Akash. In my company, like I'm going to offer you 15,000 per month, but 1 year bonding is there. Is there any problem with you? No, sir. Are you comfortable for that? Yes, sir. 15,000 with 1 year agreements. Yes. Okay. And Akash, what is the use of dynamic input command? So I think dynamic input is used in 3D. That is different. That is dynamic use. Yes. Yes, sir. Yes. Dynamic. Okay. So I think I There are forget. different type of circles in AutoCAD. What is the Yes, sir. name? So there are 6 types of circles which are mainly found in AutoCAD. That is center radius, center diameter, 2 point, 3 point, 10 radius, and 10. Okay, great. Why should I hire you? Last answer question for you. Sir, you should hire me because I am flexible and hardworking. I have the required skills that you are expecting, and that will make a company to the next level. I am also honest uh, and positive person. So give me one chance. I will put my 100% effort for the company's growth. Very good. Nice interview, Akash. I'll give you a reply after the finishing the interview. Great. Thank you, sir. Okay. Now Akash is done, and Aniket Patil, on your mic and video, please. Next turn is for Arjun Srivastav. Yeah, Aniket. Aniket, introduce yourself. Good evening, sir. My name is Aniket Patel. I have done my degree in civil engineering, and I'm pursuing masters in structures. I did my degree. I have passed out my degree in 2020, and right now I'm working under a builder for G+8 residential building Okay. as a So, site engineer. what is your key responsibilities on site? Sir, my key responsibilities on site are of steel checking, like are the steels laid according to the plan? Then shuttering checking, like the dimensions for column or beam or whatever slab it is. Then are the dimensions mentioned in the drawing and as on the site are the same or not? Then grade as in like material checking, like the material arrived on site is of proper quality or not. These are the basic key responsibilities I handle on site. Okay, great. This is based on Pune? No, sir, I'm working in Thane, Thane. Mumbai.
Mumbai. Okay. Are you willing to relocate? Depends, sir. Basic like on the salary and other things near my company. Okay. Suppose you. What's your current CTC? Oh, sorry, sir. What's your current CTC? Current CT. salary? Current salary, I'm getting a pay of 20,000 right now. 20,000 you are paying, right? Yes, sir. Okay. And suppose I am going to give you like you don't know about CTC. Maybe others are don't know. तो CTC क्या होता है? Cost. Anyone want to give the reply? CTC क्या होता है? Sir, CT is the total salary which have the deducted amount like PF or any other fund. Okay, great. Cost to company. Got it? Cost to company is CTC. So always remember, try to calculate your all salaries. That is your cost to company. So company is going to, if professional company is there, they are going to ask what's your current CTC. Got it? And what's your salary expectations? Sir, if I'm done with my structural engineering, then if I'm working as a structural engineer, like as a trainee, then maybe 20 to 25,000 per month. 20 to 25,000 per month. Yeah. Okay. Aniket, what is shear force? Shear force. Okay. No, sir. No issue. Right now you're learning the AutoCAD, right? Yes, sir. Okay. How much you rate yourself 10 out of in AutoCAD? 6, 6. 6.5. Okay. In layer, there are two options, freeze and on off. Right? Yes, sir. What is the difference between freeze and on off? No, sir. Okay, no issue. Types of arrays in AutoCAD. Path array, polar array, and rectangular array. Okay. What is the shortcut key for mirror command? MI. MI or M? MI. M for? Sorry, sir. M command, M shortcut key command for what? I guess move. What is the shortcut key for ortho command? OR. I'm trying to just explain why I spell, right? That is wrong. That is O is for offset, so I thought OR might be for ortho. okay. And what is the shortcut key for dynamic input command? Don't know, sir. Okay. What is RERA? Sir, RERA is basically a thing which a customer can rely on it. If suppose a customer needs to buy a flat in a particular building, then he or she will first check if the building is first registered to RERA, because that gives the person I don't know, safety, or maybe he can feel safe before booking a flat over there. Okay, great. Okay, Aniket, why should I hire you? Sir, apart from my CV, I am an extrovert person. I can communicate with everyone in whatever topic it is, and I will dedicate my 100% to the company. I will take the company on to the next level with my efforts. And sir, regarding my work, I will also grow. I will get to know a lot of things from your company, and also help your company to grow further. Okay. My company is going to get the agreements with you for 2 years, and we are going to offer you 25,000. Are you ready for that? Sir, in which city it might be? It may be Hyderabad. First, sir, I'll do some research. Then I will let you know in some time. Okay, great. What's your hobbies, Aniket? Sir, I like traveling and playing games. Last time where you travel? Kasol, Nainital. Kashol, Nainital. Okay. And your next hobby is what you said? Playing games. Playing game. Which type of game? So basically Counter Strike, Valorant.
type of games, like shooting games. Shooting games. Counter Strike is like in my time there was a Counter Strike like something like this. Joysticks we play. I don't know currently this is like a GTA 5 something. You can say that, but it's different from Is thoda different. Okay, great. Okay, nice meeting with you, Aniket, and this was wonderful interview. Okay. GTA. Okay, I'll give you a feedback soon. Now next is with now Arjun Srivastav. Yes, sir. Okay. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Arjun, you from? Yeah, I'm from Meerut. Sorry, Sir, Meerut. Meerut. Okay. Yes, sir. What is famous in Meerut? Sir, in Meerut, you can go to Amarnath Mandir, which is very famous. Okay. And famous in this is not about only the place. It's maybe about some like works like I heard about that they some like Bunker is there like who's created the different type of clothes. No, clothes companies are there. Engineering colleges are like too much Yes, sir. in, Yes, sir. right? There are so much universities, private universities like Subharti University, Shobhit University, and now currently the new university is IMT University. Okay. Yeah, there are different many universities in Meerut, right? Yes, yes, sir. Okay, and okay, Meerut from Meerut to Delhi, what is the distance? Sir, almost 90 kilometers. Only 90, right? Where I am located. Okay, you are in Delhi right now. I am in Gurgaon. Good. Almost. Almost Delhi. Yes. Yeah. So you are comfortable for doing the job in Delhi, Gurgaon, Noida, everywhere, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and if you got good opportunities in Bangalore, then Then I will go to okay, Bangalore. means you are ready to relocate, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What unique skills you have compared to others? Sir, I have team management skill. Any examples? Anytime you An manage the example, team? yes, sir. I have in my college that in my college when I am pursuing my diploma. That time I have a project like I done a project which is porous concrete road. Okay. That time I have a 4 members team. Okay, you manage that all teams. Yes, sir. Okay. And in your degree, what was your project? Sir, porous concrete road. In degree and diploma both? Sir, in diploma and degree both. Okay. Means you just choose the right of means easy options for both. Yes, sir. Okay. What's your hobby? Sir, I like to play chess Okay. and singing also. You are introvert or extrovert? Pardon, sir? You are introvert person or extrovert person? Sir. मीन्स आप लोगों के साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हो या फिर अकेले Yes, ही sir. रहना Yes, पसंद? sir. तो दैट No, मीन्स sir. यू आर लाइक आप बाहर सबसे मिलकर घुल रहे हैं दैट इज Yes, एक्सट्रोवर्ट sir. दैट इज एक्सट्रोवर्ट Yes, sir. यू आर पास आउट ईयर I passed out my diploma in 2019 and I am pursuing my BTech. बीटेक इन I am in थर्ड final ईयर year. Yes, sir. फाइनल ईयर In final. Yes, Okay. sir. Your current CTCs, oh sorry, I'm asking about CTC. Your current percentage? Almost 65. Almost 65. It will reach it. Try to reach at least 70. Is it possible? I don't think so, sir. Because I am in the company where I don't have any time. Okay. You are working anywhere? Yes, sir. Okay, great. Where? Sir, I am working in Shobha Limited. Sobha Limited. Okay, as a site engineer? Yes, sir. Okay. What As are a the supervisor. as a supervisor? What are the key responsibilities there? Sir, to record for the all work which is going on site Okay. and permit all
give the permit to all the technicians and labor. Okay. So they are providing some accommodation also? No, sir. Okay, you're doing by yourself. So what salary they are offering you? Sir, my current CTC is 24,010. Okay, great. That means your focus in job right now is not focus in college. You're just trying to complete the degree, right? Yes, sir. Great, good things. Okay, you completed your AutoCAD, right? Means near to completed, right? So in AutoCAD, you know what blocks? Blocks, yes, sir. What is the use of block? Sir, block is using for if I make any object which is not in, which is I can't use joint command, so I can make a block for that Okay, okay, particular piece. great. And you know static block and dynamic block also? No, sir. Okay. And there are some types of array in AutoCAD. Yes, sir. Polar array, path array, and circular array. Circular array? Or what is the different name is there? Sir, I can't remember now. Okay, no issue. Great. Why should I hire you, Arjun? Sir, because I have 3 years of experience almost as a site engineer, and I have a great skill to manage all the things like how to manage a site, how to manage labor. Okay, but here your profile is different. Your profile is structure engineering. Yes, sir. Okay. What's your expectations of salary? Almost 26, 27. Okay. You can say in the professional manners, whatever my current salary, 20% more, 30% high, like this. Okay. Yeah, this was a nice interview, Arjun, as per your first interview, and you can take your time. I'll give you feedback. Okay. Thank you, sir. Okay, most welcome. Yeah, next is now Arjun is done. Prajwal, on your mic, please. Okay. ओहो क्या बात है बालों सही कर रहे हो तुम यार कंगी Good evening, sir. गुड इवनिंग फ्रॉम वेयर यू प्रज्वल So I'm from Mumbai, ओके इन मुंबई specifically वेयर Dadar. Specifically Dadar. स्पेशली इन दादर ओके which area is famous in Dadar? Sir, primarily there are many regions in Dadar, particularly in Dadar, Shiv Sena Bhavan, which has been in the news currently. Other than that, for religious purpose, Siddhivinayak is pretty famous. And another spot for picnic purpose is the Shivaji Park, or it's called like a smaller version of Marine Drive. Okay, in total complete Mumbai, which area you like most? So the most attractive part of the Mumbai is obviously the South Bombay part, where you see the historical places such as Chhatrapati Shivaji Terminus, the BMC office, and the Mantralaya. So that place is pretty historical. So the architecture over there is a little bit different, and they have maintained it so it looks better. Complete area of complete area of Mumbai. Yes, sir. Well, I have some idea. Okay, approx how many kilometers for total areas if I'll calculate Mumbai? No, sir, but I can tell you the length and the width. Yeah. I don't know the whole Yeah, area, length but and width. so from I think from Mumbai, from South Bombay up to Mulund Cheknaka. So that is the length of the Mumbai, which is approximately 75 kilometers, and width wise is I'm not sure about the width because Okay. it's different No, islands. means definitely you know about that. Definitely for everyone, this is remember. If you are from any like different places, so anyone can ask you what is famous in that place, what type of food famous in that place. This type of question HR can ask. That's why I'm asking. Okay, Prajwal, what is your hobbies? So my hobbies is basically football, traveling, and reading books, specifically mangas. Okay, what is the football pitch size? Uh, uh,
But so the length is approximately 110 meters and the width is perfectly 68 meters. Great. Okay, Prajwal, why should I hire you? Uh, so, uh, so the first thing which as a company you would need someone who is consistent. So that is something I could assure you that is something I bring along with me. Other than that, Prajwal is someone who might need little guidance but doesn't need a spoon feeding. So that is one great quality. Other than that, the final point I would want to put ahead is your company is based in Pune. So, being a Maharashtrian, I am fluent in three languages, which are Marathi, Hindi, and English. So I can communicate from the bottom to the higher most management with ease, Great, which I think could bring. great. What's your salary expectations? I think 10% hike, 10 to 15% hike from my current CTC would be great. What's your current CTC? Uh, Currently, in hand, I'm getting 28,000 something, 28,000 What's your approximately. job profile? Uh, I've recently joined Coldwell Richard Bankers. That's based in BKC, and I'm working as a project coordinator as in the vertical of design and environment, more specifically environment. Great. Okay, Prajwal, nice to meet with you, and this was a nice interview. Great. Okay, thank you Okay, so much. okay, great. Now next is Rahul Ranjan is done, and Sandesh Vani on your mic and video, please. Sandesh Vani, we done with that you, right? Oh, sorry for that. I'll just forget. We done with you, right? Okay. Next is Ambuj there. Ambuj, you reach your home? Ambuj अपने घर पहुंच चुके हैं. Now we start with Sujata first, then Ambuj. Yes, sir. Yes. Okay, next is your turn. First we'll done with Sujata. Sujata, on your mic, please. Sujata, yeah. Introduce yourself. Introduce yourself, please. My name is Sujata Ramchandra Katkar. I completed civil engineering in Pune in 2020, and currently I left the job. Uh, from last 8 months, I done internship in RCC consultant office, and Okay. In which now college? Like your pass out college? Which college in Pune? pass out college in Trinity College. Trinity College. Yes, I remember. Okay. So, what was your key responsibilities? Consultancies where you done your internship. Key responsibilities. Designing load calculation. After that, size column and beam sizes calculation I done there, and drafting, some work of drafting also, Okay, means you have a and knowledge. Yeah, correct. Continue. Continue. modeling on ETAB. Okay, great. Means you know many things in structures, right? So you know how to calculate load, right? Yes. Okay. What is the use of secondary beam? Uh, Second. Secondary beam. If the span is greater, then we divide that beam by the secondary beam also. Okay, great. What is hanger bar? Don't know, sir. Okay, no issue. And definitely you done your structure analysis. Then that you know which IS code we use for wind analysis. IS wind analysis, no? IS 45, sorry, IS 1893 2016. Then for seismic. Seismic. Okay, maybe Don't know now. you I can't confuse. remember now. I think you confused right now. Okay, when you left your Yes. internship, when you left your internship, Last 15 days I left. okay, just before last 15 days, right? That is Pune based or Mumbai based? In Mumbai, Panvel. Okay, that was in Pune, Panvel. And are you looking for a job in Mumbai based or like in Pune? Mumbai. Why should I hire you, Sujata?
Because I have software knowledge of AutoCAD and ETAB, and I have hands-on experience on ETAB and also in AutoCAD, and so you can hire me also. Okay. Sujata, difference between section and elevation. Elevation shows the front view of the house or house building, and section shows the cut section of that building. Okay. What's your hobby? Traveling and swimming. Traveling and swimming. Okay. There are some speeds in swimmings, na? I don't know much about that. There are some speeds. Need speed. How many minutes? How much you completed distance, right? Yes. Okay. So So, yeah. Explain now about I swimming. don't know the speed. Okay. Okay. No issue. Your second hobby is cooking, Traveling traveling. Last time where you travel? in Punjab, Golden Temple, Golden Temple, Amritsar. Okay. Amritsar. Okay, that was nice. And you done your langars also? There is a langar, right? Yes. You know about langar? Not that much. They are offering some food that is called langar. Okay, maybe you don't know about that. Okay, Sujata, what's your salary expectations? 20,000. Okay, what you get the salaries in your internship? 15. 15,000 they are providing you, right? After 8 months, they like your there was any bond or you left from your side? So I left from my side because I know that I can grow up I can learn many things. So I left, and I also want to do this courses that RCDC and STAT Pro. So I want some time to do these courses. So I left. Okay. Uh, Sujata, tell me something about yourself which is not mentioned in your CV. So see, traveling and hobby is not mentioned. Okay. Okay, Sujata, you done your ETABS, right? So definitely you know what is the difference between statics analysis and dynamic analysis. So in static analysis, we apply the load on a structure, and the structure is stable. And in dynamic analysis, we do by response spectrum analysis or by time history analysis. So the response of the structure can show in a dynamic analysis. Difference between By yeah, correct. Difference between linear analysis and non-linear analysis. I can't remember now, sir. Okay, you forget about that. Okay, there was some mass sources, right, in ETABS. What is the use of mass source? Yes. To calculate the base shear. Calculate the base year? Are you sure? To match the scale with the ground and to calculate the base shear. Scale. Match the scale with the ground. That is exactly used for scale. Okay, great. And which IS could be used for live load? Live load for IS 456. No. Okay. IS 875 part 2. Sure? Yes, IS 875 part 2, sure. Okay, great. Nice to meeting with you, Sujata, and this was wonderful interview. Just take your time. I'll just give you feedback. Okay. Great. Thank you, sir. Okay. Ji. Now next is Ambus is there. Yeah, Ambus Tripathi. Yes, sir. Yes. On your mic, and if possible on your video also, it will be better for you. Yes. And the next turn is for Bikash. Okay. And now next. Okay. Ambus, tell me something about. Good evening, sir. Good evening. Tell me something about yourself. Sir, my name is Ambus Tripathi. I have completed my academics from. Sir, I am from MP, Madhya Pradesh, Rewa, Madhya Pradesh,
and I have completed my academics from my hometown school. It's basically a government school. Hmm. Then I completed my BTech from Chennai, SRM University, Chennai, in 2015, and then I started working under one architect. And before COVID, I left my job, and now I'm looking after my family business, and I'm also working as a manager in a fuel station. Okay. What's your hobby, Ambuj? Uh, my hobby is basically weightlifting, but currently I'm not pursuing it. Okay, only weightlifting. Yes. At at your free time, which app you use most? Uh, Currently, I use a unique civil, but before I used to use YouTube. YouTube. Which is your favorite YouTube channel? Not related to civil, anything. Sir, for entertainment purpose, it is sir, Flying Beast. It's a basically blogging channel. Uh, so Okay, great. I watch. You like to watch the blogs, right? Yes. Okay, okay. Ambuj, you done your AutoCAD, so definitely you know about layers. What is the use of layers? Layers are generally used to show the different you can say different particles. For example, sir, if we want to show doors, or if we want to show windows or walls, so we can divide these things on different layers. So yes. Okay. What's your strength? Strength. Sir, I can work under any circumstances apart from my domain, like apart from civil engineering, also I can work under any domain, sir. Currently, I'm working as a manager in a fuel station, and I'm looking after my business also. It's a furniture business. Correct. So I can work under any circumstances and any domain. What's your weakness? Weakness, sir, I'm stubborn. You can say if I decide anything to do, I definitely try to complete that works. Okay. So that is your weakness. Okay. Yes. Where you want to see yourself after 5 years? Definitely, I see at least 50%. At a higher position. Yes, 50% higher position. Where currently I'm, Okay, great. yes. Okay. Ambuj, why should I hire you? Sir, as I said, I can work under any domain apart from civil engineering, and if I get opportunity to work under you or in your company, definitely I will use this skill to Okay. your companies. Are you willing to relocate? And definitely, sir. If I get opportunity Okay. within India, I will definitely relocate. My company is going to offer you 20,000, and we are going to get. We want agreement from your side for 2 years. Are you ready for that? I need some time, sir. Okay. You need to time for think, right? Okay. Yes. Great, Ambuj, and this was a night interview, and I'll give you your feedback later. Okay. Good. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. Most welcome. Nice. This was nice. Subodh, on your mic, please. Sorry, Vikas. First, my Vikas, then Subodh. Yeah. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Vikas. Vikas, you're from I'm from Haryana. Haryana. Right now, you're working anywhere, right? Yes, sir. Which company? Agranti Realty Private Limited. Okay. Why you want to left your company? Why you I didn't want, get it, sir. why you want to left your company? Because, sir, I have an interest in structure field.
Okay. Then why you joined a site engineering job? At that time, I am not much aware about the various fields of civil engineering. Okay. How was you in your academic? As average student, sir. Right now you student? No, sir. Okay. Your pass out year? 2016, 16. What was your percentage in your BTech? 62%. 62%. Means you are Yes. average student, right? Yes, sir. Okay. Great. Vikas, what's your hobby? Cooking. Cooking. Only cooking is your hobby? Yes, sir. I like cooking. Okay. Which food you like most? Vegetarian food. Yeah, definitely vegetarian. There are some names: Sahi Paneer, Matar Paneer, something like that. Because your cooking is your hobby. Which type of Jackfruit. jackfruit? Okay, great. Vikas, what's your current CTC? 25,000 per month. 25,000 per month. Okay, and what's your expectations? 10% hike, sir. 10% hike. And if I want to give you 20% hike, Then it's good for me. okay. So don't mention 10%. You can say currently my CTC is this. I want more than that. Okay, sir. Maybe they want to give you 30%. You got your loss, na? Okay, sir. Okay, so don't mention 10%. Okay, because what is the use of crank bar? What is the use of crank bar in beam? What is the use? Sir, there is more hogging moment near the junction. So to overcome that hogging moment, we provide crank bar. Where we use extra bars in beam? Extra bar provided in bottom to overcome shear. Or overcome the shears. Okay. And what is honeycomb? Honeycomb defect due to no proper mixing of concrete, maybe not proper use of vibrator. Correct. What is escrow account in RERA? Escrow account. According to RERA Act, builder or developer have to maintain a different account. That's known as escrow account, and 70% amount have to be deposited in that escrow account. Great. Okay. What is building by law? Building by law, framed by the town and planning department. So the city or the area for which plan is made, that is executed in a disciplined way, and for a residence there is proper light, ventilation, and structural safety. Great. And what is building line? Building line is a line up to which the plinth of the building may be extend. Great. Uh, What's your hobby? Cooking. Hobby cooking, You sir. mentioned cooking, right? Why should I hire you, Vikas? Sir, I will turn out to be a key player of your company. I assure you, you will never regret for the decision to hire me. Okay, great. And Vikas, tell me your biggest achievements in your career. Okay. What's your weakness? Sir, I cannot say no if anyone asks me for help. Okay, great. And what's your strength? Sir, I am very hardworking person and loyal toward my work. Great. This was nice interview, Vikas, and I'll give you Thank feedback later. Okay, great. Thank you, sir. Okay. Now last interviews. Okay, off your mic, please. Subodh. Subodh is there? Yeah. Subodh, on your mic, please, and video also, if possible. Okay. Subodh, recently you left your job, right? No, sir. I am working, but try to leave the company. Okay, try to Good evening, leave. sir. Good evening. Good evening.
How are you? I am fine, sir. Okay. So you're trying to left your company, but you're right now you're working, right? I think you're wait for your salary. No, sir. Okay. Working hours, sir. Due to the, I will not adjust myself and coordinate with my family members. Great. You're married or unmarried? Married, sir. Okay. What's your current CTC? My current CTC is 2,51,000. 2,51,000. Okay, great. So that's why you want to get more, and that's why you want to switch your company, right? And you want to come in Yes. structures also. What is shear force? Yes, sir. What is shear force? Shear force is produced in the beam. Uh, the sorry, sir, I cannot explain right now, sir. Okay, no issue. And right now you're learning the AutoCAD. So in AutoCAD, what is the shortcut key for ortho command? Shortcut key for ortho command. OR, sir. Okay. What's the, what's your strength? My strength is to work with my team members. Okay. What's your weakness? My weakness is to I agree in every words that the people say Okay. lightly. Okay. What's your biggest failure in your life? My biggest failure was in my last company, in the expert one-stop solutions, where I has made the mistake in the beam. It's a slab of extended slab. In those, I have made the mistakes, and from my point of view, I has changed the whole beam. But the structure engineer has come and they tell me that I was wrong. The steel is the steel that I have done. I have changed from my side was not wrong, but as per quotations and as per the term and conditions of the load, it was not suitable. Okay. And what's your biggest achievements in your career? I am searching for it, sir. Okay. Great. Why should I hire you, Subodh? I work in such a way that in my boss or my manager get not workload. I take all the workload and coordinate with all the people. Okay. What's your hobby, Subodh? Currently, nothing, sir. As per workload, sir. I have denied. What you like to do at your free time? I just want to study and some books. Which book you like most? The 7 Habits. I want to just start reading, sir. Okay. Who's the writer of that book? Robert. Kiyosaki? No. Robert Kiyosaki? Sir, names I missing, sir. Okay, no issue. Okay, Subodh, nice to talk with you. I'll just give Thank you you. all feedbacks. Okay, great. चलो, अभी सबने थोड़े थोड़े इंटरव्यू दिए और सबको ही समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कुछ लर्निंग्स मिली होंगी आपको. ग्रेट. इसमें एक जस्ट मिनट या सबके ही इंटरव्यूज लगभग ओके थे. कुछ लोगों के इंटरव्यूज में कुछ मिस्टेक्स थी, सो मैं वो करेक्ट करने के लिए आपको सेशन देने जा रहा हूँ कि क्या क्या थे. उसके बाद आपके खुद के क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो. ठीक है, जैसे कि ये फैल स्टार्ट विथ संदेश वानी. संदेश, आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द टॉपिक्स. आपको आती हुई चीज़ें भी आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, दैट्स वाई स्कोर 10 आउट ऑफ 2.5 मार्क्स. ठीक है, 2.5 मार्क्स यू गेट. तो आपको कई चीज़ें आ रही थी जिसमें आप कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. सो ट्राई टू करेक्ट. कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है.
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है सो दैट कि इसको इम्प्रूव कर सको, ठीक है। नाउ कम विथ शुभम गोस्वामी। शुभम गोस्वामी का काफ़ी अच्छा टेक्निकल था, कम्युनिकेशन इनका भी वीक है एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। सो शुभम गोस्वामी यू गॉट द 4.5 मार्क्स आउट ऑफ 10, ठीक है। 4.5 आपको नंबर मिले हुए हैं आउट ऑफ 10। मिनिमम जो नंबर्स है, अगर आप सिलेक्शंस की तरफ जा रहे हो तो 7 मार्क्स चाहिए सिलेक्शंस के लिए, परफेक्ट अगर होना है तो। अगर मेरे 7 मार्क्स आपको मिलते हैं अपकमिंग इंटरव्यू में, ये 15-15 दिन पे इंटरव्यू होते रहेंगे आपके, ठीक है। तो आपको जजमेंट मिलता रहेगा कि एग्जैक्टली हम कहाँ पहुँच रहे हैं। राइट नाउ शुभम गोस्वामी गॉट द 4.5 मार्क्स। ओवरऑल अच्छा था इनका, एंड थोड़ा सा कम्युनिकेशन वीक था इनका। राहुल रंजन का भी अच्छा था, कम्युनिकेशन प्लस राहुल रंजन में एनर्जी की थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम्स दिख रही थी, ड्यू टू एनी रीजंस, मे बी कोई भी रीज़न हो सकता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो बहुत ही एनर्जेटिक फील होना चाहिए। अगर मैं डेफिनेटली, आपको पता है मैं क्या बोलते हैं, आज जो काम कर रहा हूँ 3 बजे से मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ फ्रॉम 3 o'clock, एंड राइट नाउ सेम चेयर पे उठा भी नहीं हूँ, टिकट से टॉयलेट जाने के लिए गया था, उठा भी नहीं हूँ और कंटिन्यू में काम कर रहा हूँ, और इस लियरली टू 11:30 बजने वाला, राइट। तो अभी आपको क्या ऐसा दिख रहा है क्या कि मैं बहुत लेजी हो गया हूँ या फिर मैं बहुत ऐसे, ठीक है। और मैं वैसे तो काम तो मॉर्निंग से करने, बट 3 बजे से मैं कंटिन्यू बैठा हूँ। तो इंटरव्यू में जब भी आपको बैठना है तो फुल्ली एनर्जेटिक होके बैठना है, सो दैट कि सामने वाले को आपकी एनर्जी से प्रभावित, वो सामने वाला अट्रैक्ट हो आपके एनर्जी से। सो यहाँ पर नीड थी राहुल आपकी। बाकी ओवरऑल आपका टेक्निकल अच्छा था, आपका एंटरटेनमेंट मीन्स हॉबीज वगैरह सब कुछ अच्छा था। यू गॉट 4 मार्क्स, ओके। एंड आकाश डालवी का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था कंपेयर टू अदर्स, तो इनका अच्छा स्कोर है, कम्युनिकेशन भी इनका अच्छा है, एंड ही गॉट द 5 मार्क्स। टेक्निकल में इनको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है आकाश डालवी, टेक्निकल में तुमको थोड़ा सा वर्क और करने की ज़रूरत है। ओवरऑल तुम्हारा अच्छा था इंटरव्यू। अनिकेत पाटिल जी का भी अच्छा था, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने, और कम्युनिकेशन इनका ओके था, मतलब अच्छा भी नहीं बोल सकते, बुरा भी नहीं बोल सकते हैं। ही गॉट द 4 मार्क्स। अर्जुन श्रीवास्तव का भी अच्छा था, ही गॉट 5 मार्क्स, एंड अर्जुन श्रीवास्तव का ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। प्रज्वल का बहुत ही अच्छा था, मीन्स यू कैन से ही वॉज द टॉपर, एंड ही एंड विकास दो लोग काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ही गॉट द 6 मार्क्स। प्रज्वल ने बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया, और वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम बिकॉज ही इज़ एक्सपीरियंस्ड। तो प्रज्वल का काफ़ी अच्छा था, और सुजाता का टेक्निकल वीक है और कम्युनिकेशन भी वीक है। आपको कई चीज़ें आती हैं, आप भूल चुके हो सुजाता, उसको रिकॉल करो चीज़ों को, ठीक है। इंटरव्यू में जब आप कर रहे थे तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, कई चीज़ें तो कम्युनिकेशन की वजह से नहीं कर पा रहे थे। डेफिनेटली मुझे पता है घर में लोग हिंदी में बात करते हैं या फिर मराठी में बात करते हैं, तो फिर इंग्लिश कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, बट कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अस ना, तो हमें कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। होप यू एग्री विद दिस, ठीक है। बाकी आपका ओवरऑल ओके था। अंबुज का काफ़ी अच्छा था, एज पर हिज वर्क शेड्यूल, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, मैं इनको बहुत ही एडमायर करता हूँ, और इन्होंने 5 मार्क्स गेन किया हुआ है। कम्युनिकेशन और थोड़ा सा इंप्रूव करने की नीड है अंबुज को, और थोड़ा सा टेक्निकल भी, बट ही गॉट द 5 मीन्स एवरेज अच्छा है इनका। एंड विकास का वंडरफुल था, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। ही गॉट द 6 मार्क्स, एंड होप सो ये भी जल्दी ही सिलेक्शन पाएंगे, 1 रेटिंग मार्क्स रिक्वायर्ड। सुबोध को अभी कम्युनिकेशन में भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल में भी। ही गॉट 3.5 मार्क्स, ओके। कोशिश करना है कि सबको 7 मार्क्स तक पहुंचना है। दिस वाज द ओवरऑल फीडबैक फ्रॉम माय साइड। अब आप बताओ कि आपको इस 1 घंटे को इन्वेस्ट करने के बाद कुछ फ़ायदा मिला? कमेंट कर सकते हो, माइक ऑन कर सकते हो। अब आपका टर्न है, ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? कमेंट करके बताइए। ओके, संदेश ने बोला यस सर मुझे हुआ, ओके ग्रेट। अंबुज को भी फायदा हुआ, इनको करना ये है, ओके ग्रेट। आकाश को भी। हेलो यस, हाँ जी पूछो अर्जुन। सर, स्पीकिंग में थोड़ी बस इशू आता है, इसीलिए जो है ना, जो साथ में अभी शोभा में ही मेरे साथ एक पर्सन ने ज्वाइन किया है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उन्हें हिंदी नहीं आता है, करेक्ट। तो उनके साथ रह करके थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम फिर भी आ ही रहा है सर। ओके, ये प्रॉब्लम तो देखो आएगा, लेकिन जब बार बार प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, तो अपने आप ये प्रॉब्लम कम होता चला जाएगा। गॉट इट? सर अभी हम लोग पैदा तो अंग्रेज तो पैदा नहीं हुए, तो फिर धीरे 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 ही होने वाला है, बट इट्स नीड टू डू प्रैक्टिस।
ठीक है। Okay. तो जितना प्रैक्टिस करोगे ऐसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करो, जैसे कि तुम ग्रुप में भी हो ना, तो हम एक ग्रुप में Yes, sir. एक ग्रुप आपको शेयर करेंगे, वो ग्रुप केवल कम्युनिकेशन के लिए रखा हुआ है हमने, ठीक है। आप लोग उसमें अपनी मीटिंग्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे गूगल मीट तो सब क्रिएट करना जानते हो, ठीक है। तो Yes, sir. गूगल मीट पे एक मीटिंग क्रिएट करो, उसके बाद ग्रुप में डाल दो, इफ एनीवन इंटरेस्टेड टू टॉक ज्वाइन अस, ठीक है। अगर सर कोई सुबह 8 बजे शेड्यूल स्टार्ट होता है ओके, डेफिनेटली और उसके बाद ये तो तुम्हें मैनेज करना 8 बजे तक रात को चलता है। सर मैनेज का टाइम बस इतना मिलता है कि मैं आ करके हाँ। और खाना खा के केवल जो असाइनमेंट आप देते हो उसे पूरा करके और मैं बस क्लास करने बैठ जाता हूँ। ग्रेट, आप हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करो फिर जो आपके साइट पर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ना, उनको मोटिवेट करो, यस सर। ठीक है। कभी कभी कैसे होता है कि अपने साथ के जो लोग हैं उन्हीं को उठाने के लिए प्रयास करवाओगे ना, तो वो लोग भी सोचेंगे यार अपना बेनिफिट है, वो तुम्हारे साथ ज्वाइन होने लगेंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो उनको बोलो कि यार देखो, एक अच्छे इंसान, अगर किसी इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो सेम नॉलेज के साथ 5 लाख का पैकेज पा जाएगा, और किसी का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, सेम नॉलेज के साथ 3 लाख का पैकेज पाएगा, तो 2 लाख का लॉस है, ऐसा उसको दिखाओ, ठीक है। तो Yes, 2 लाख के लालच में वो कोशिश करेगा कि चलो अभी सीखते हैं, ठीक है। यस सर। चलो ग्रेट। और किसी क्वेश्चन है? ओके, वेलकम। हाउ टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन के लिए मैं आपको एक ग्रुप शेयर कर दूंगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में मीटिंग्स क्रिएट करिए, आपस में बात करिए, इज गोइंग टू टेक टाइम। और उससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप जिनके साथ रहते हो, ठीक है, उसको बोलो कि तुम भी सीखो हमें भी सिखाओ, ठीक है, तुम भी सीखो हमें भी सिखाओ। मैंने ऐसे ही सीखा है, ठीक है। डेफिनेटली जिस ऑफिस में था मैं, मतलब कि फर्स्ट जॉब में, तो मेरी भी कम्युनिकेशन की सीख तैसी हुई थी, क्योंकि आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, टोटली हिंदी वाली नगर से हूँ। महादेवी वर्मा और अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन का पड़ोसी हूँ, तो मेरी हिंदी तो बड़ी अच्छी थी, बट इंग्लिश का एकदम से वो हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो भी इन्वायरमेंट में था उनके साथ मैंने थोड़ी सी फ्रेंडशिप अच्छी की। उसके बाद उनको बोला यार कि मुझे भी थोड़ा सा सिखाओ, और मैं ऐसे लोगों के साथ में ज़्यादा रहने लगा, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सेल्फिश होना पड़ा, बट आई गॉट द बेनिफिट। डेफिनेटली वो भी अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा डेडिकेशन था कि मुझे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करके साइड भी होना है, ठीक है। किसी के पास बैड हैबिट है तो भी मैं बैठता था कि मुझे कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बेनिफिट में पॉजिटिविटी ले सकते हो। किसी और को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो, हाँ विकास सर एक असाइनमेंट का क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो ना। ड्राइंग थी ना सर, टरबाइन से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, सॉरी? जैसे टरबाइन की तरह दिखती थी, ड्राइंग थी हमारी ऐसी कुछ। ओके। उसमें था एक जगह पे, मतलब स्पेसिंग मेंटेन करनी थी, बीच में 20 पैरेलल लाइंस थी सर, वो नहीं हो पा रही थी मुझसे। मैंने कर तो दिया, लेकिन उसमें मुझे मैथमेटिक्स ज्यादा लगाना पड़ गया, साइन 60, परपेंडिकुलर हिपोटेन्यूज, आई सब थिंक जाके वो जो आर्क शेप है क्या, ऐसे कुछ था क्या? हाँ ऐसा सर है सर, इधर भी सर्कल है और इधर नीचे भी सर्कल है, ऐसे घूम के आती है ऐसे लाइन। बेटर होगा कि इसको मंडे को ड्राइंग दिखा देना हमको। अगर आप सर मेल चेक कर सको तो मैंने आज ही मेल की हुई है वो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, उसको स्किप रहने दो वहीं पे। मंडे को वो इसको दिखा देना हमको, तो वहां पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। अभी आज असाइनमेंट्स नहीं चेक करेंगे, सबका असाइनमेंट्स मंडे को ही चेक होगा, और आज एक असाइनमेंट्स आपको और मिलने जा रहा है, ठीक है। तो सर मैंने असाइनमेंट्स चेक किया हुआ है। ओके, मैंने एलिवेशन सेक्शन, वेरी गुड, आपने किया है, ग्रेट। सबका असाइनमेंट्स मंडे को चेक किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट असाइनमेंट जो आपका है वो है कि आपको लेक्चर नंबर 11 वॉच करना है, और उसके साथ साथ 2 प्लान आपको मिलेंगे, जो कि दोनों ही प्लान इंडस्ट्री के रहेंगे। प्लान 1 और प्लान 2 नाम से रहेंगे। आपको सैटरडे को प्लान 1 बनाना है और संडे को प्लान 2 बनाना है। 2 प्लान मिलेंगे, दोनों प्लान को बना के आप मंडे को शेयर करोगे हमको, और साथ ही साथ लेक्चर नंबर 11 केवल एक लेक्चर वॉच करना है। लेक्चर नंबर लास्ट टाइम 11 दिया था क्या मैंने शायद ना? सर 11 आपने दे दिया, यस सर, वो तो रेरा पढ़ाया आपने उससे दोबारा। एग्जैक्टली। लेक्चर नंबर 12 आपको केवल करना है, और 2 प्लान करना है, ठीक है। प्लान 1 प्लान 2 नाम से रहेंगे, दोनों ही इंडस्ट्री के प्लान हैं, उनमें सेक्शन है, एलिवेशन है और प्लान है, दोनों ही प्रोजेक्ट में। तो सेम टू सेम आपको बनाने का प्रयास करना है, और उसको हम लोग मंडे को देखेंगे, वो आपको अभी मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। किसी को कुछ डाउट? ठीक है।
अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है। असाइनमेंट्स के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मंडे को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। जो भी मैंने आपको फीडबैक दिया है उसको इम्प्रूव करिए। हाँ संदेश बोलो। चलो सर, इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है सर? मतलब अपन डरते सर हर एक जवाब देने को लिए, या कम्युनिकेशन वीक होती है, तो मतलब उसका कॉन्फिडेंस एकदम कैसे करने का, ओके, बिल्टअप करने का? तुमको सबसे ज़्यादा खेल कौन सा पसंद है? सर क्रिकेट। क्रिकेट बहुत पसंद है, राइट? तो जब तुमने फर्स्ट डे क्रिकेट खेला था और उसके बाद अभी जो क्रिकेट खेलते हो उसमें कुछ फर्क रहता है? हाँ सर। अभी अच्छा खेलते होगे पहले के कंपेयर में, हाँ, राइट? तो वो कैसे हुआ? और प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे? अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि आपके साथ जो भी लोग रहते हैं उनको बोलो यार कि आपका भी, देखो हम कोई भी इंग्लिश भाषा को प्रमोट नहीं करते, बट नीड है यहाँ पे कि अगर आपको एमएनसी में सिलेक्शन पाना है तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो उनसे बोलो कि यार आपके साथ हम क्या बोलते हैं 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जो भी स्पेंड करते हैं, अब हमारे साथ कुछ लोग तो आपको थोड़ा सा जो बहुत खास होगा ना वो तो आपको भाव नहीं देने वाला है, नए लोगों से इंटरेक्ट करो। ठीक है, नए लोगों से इंटरेक्ट करो तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो फिर आपको समझेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे। जिसको आप हमेशा गाली दे के बात करते थे उससे जब आप बात करोगे बोलेगा चल बस कर, भगैती मत कर, ऐसे करके बोलेगा, राइट? जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। तो उससे तो नहीं हो सकता, बट नए फ्रेंड से आप ऐसा कर सकते हो। 50-50 का वेटेज हो जाता है दोनों में। कई ढेर सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि बहुत ही कम नॉलेज में बहुत ही अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, और कई लोग बहुत ही अच्छे नॉलेज में बहुत कम सैलरी उठा रहे हैं। तो ड्यू टू कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहती है ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, अपने आप उसमें जैसे ही तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होने लगेगा संदेश, कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। तो इस चीज़ को इंस्टॉल यस सर। करना है। ठीक है, तो कोशिश करो कि तुम किसके साथ ज़्यादा रहते हो उससे बोलो कि यार मैं इंग्लिश में आपसे बात करूंगा 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, और 15-20 मिनट में नहीं हो सकता है तो बोलो 5 मिनट करूंगा। ठीक है, 5 को 5 से 7 करो, 7 से 10 करो, ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव करो। ठीक है, ठीक है। एक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उस ग्रुप में कनेक्ट हो जाना, उस ग्रुप में लिंक शेयर करना और सबसे बात करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपका बेनिफिट होगा एक दूसरे से बात करके। ठीक है, यस सर। ओके सर, हाँ। और आप रिज्यूम चेक करने वाले सर, रिज्यूम आपने चेक नहीं किए थे? मंडे को, तो मंडे को लाइक ऑन करके जैसे अभी तो बोल रहे हो ना, ऐसे जस्ट याद दिला देना हमको। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी कैसा होता है असाइनमेंट्स रहते हैं, टास्क रहता है, तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, आप याद कराओगे तो हम तुरंत रेडी रहेंगे। ठीक है, ओके। ओके ग्रेट। चलो ठीक है, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। होप आपको मजा आया होगा। बहुत दिन बाद इंटरव्यू का एक डेमो देखा होगा और हमने लगभग सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा, ये भी लर्निंग आपको मिली होगी। सर एक क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो। और सर, मुझे ना किसी ने कहा था कि नॉलेज से ज्यादा अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स ज्यादा है तो आपका पैकेज और अच्छा लग सकता है, या आपको कंपनी ज्यादा प्रेफर करेगी औरों से? वो रहता है क्या बोलते हैं, डेफिनेटली दैट इज करेक्ट, बट वो रहता है एक्सपीरियंस पे। जो फ्रेशर्स हैं उनमें ये क्वालिटी सेकेंडरी होती है। फ्रेशर्स का फर्स्ट क्वालिटी कैसे है कि उनकी एंट्री करने के लिए चाहिए ना। तो मैनेजमेंट इज लाइक कि डेफिनेटली जब आप कोई भी कंपनी में हो, आप अभी कैसे क्या एज अ डिजाइन इंजीनियर काम कर रहे हो, कल को आप टीम लीडर बनोगे तो आपके अंडर में डिजाइन इंजीनियर रहेंगे। तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर डिजाइन इंजीनियर 25,000 ले रहा है तो टीम लीडर कम से कम 35,000 तो लेगा, तभी तो टीम को लीड करेगा। गॉट इट। लेकिन वो सेकेंडरी हो जाता है अगर आप फर्स्ट एंट्री कर रहे हो तो। ओके, ठीक है, और जैसे आपकी एंट्री हो चुकी है उस प्रोफाइल में, जिस प्रोफाइल में आपको करियर बनाना है ना, जब नेक्स्ट टर्न आएगा तो वहां पर मैनेजमेंट ने फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। ओके, हाँ चलो ओके। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा तो बिल्कुल बता सकता है, आपका स्वागत है। ऐसा क्यों होता है कि वर्क अगर 6 महीना 8 महीना हो जाता है तो कंपनी को लगता है, क्या एम्प्लॉय को ऐसा फील होता है कि नहीं कंपनी अब मेरे साथ बिहेवियर वैसा नहीं रखता जो पहले का है? कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो कि मतलब कि एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो? दोनों के सर। अच्छा, मतलब कैसे बिहेवियर, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। बिहेवियर मतलब कि सर बातचीत में डिफरेंस हो जाना, वर्क के हिसाब से भी डिमोटिवेट करते रहना।
देखो ये दो तीन चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है, लोगों का अलग हो सकता है। देखो ये तुम अभी साइड जॉब पे हो, ठीक है, तो ये एक अलग स्किल है। ऑफिस जॉब में ऐसा नहीं होता है। ऑफिस जॉब में आपका जितना एक्सपीरियंस होता है इतना ही आपका रिस्पेक्ट बढ़ता चला जाता है ब्रदर। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली वहाँ पर आप सीनियर होते चले जाते हो, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। अब रही बात साइड पे, तो साइड पर लोग आपके साथ यूज टू होने लगते हैं। करेक्ट, साइड पर आपके साथ लोग यूज टू होने लगते हैं। प्लस कुछ कंपनी को ऐसा होता है कि उनका सैलरी का स्टेटस होता है कि भाई इतना ही हमें पे करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका एक्सपीरियंस 6 महीने 8 महीने हो गया, डेफिनेटली अब आप प्रमोशन के लिए तैयारी करने लगोगे। तो जब आप प्रमोशन के लिए सोचोगे कि अब मेरा प्रमोशन होगा या फिर इंक्रीमेंट होगा, तो उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे, जिससे आप कभी भी ये ना बोल सको कि मेरी सैलरी का कुछ हाइक नहीं हुआ। तो जब सैलरी हाइक की बात आती है तो ऐसी कंपनियां जो छोटी छोटी माइंडसेट की कंपनियां होती हैं वो करती हैं। और सही बात है कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अच्छी कंपनियों में जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट बढ़ता है। साथ ही साथ कंपनी जब 5 ईयर्स से ज़्यादा होती है तब वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तब वहाँ पर जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो सोचता है कि डेफिनेटली आपके पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, इसकी वजह से आप एक ही कंपनी को बार बार कंटिन्यू किए पड़े हो 3-4 साल 5 साल से, ठीक है। तो बड़ी कंपनियों में 4-5 साल में कम से कम ये रिस्पेक्ट जाने लगता है। छोटी कंपनियों में तो 8 महीने में जब अप्रेजल का टाइम आएगा तो ऐसे नौटंकी होने लगती है। ये समझेगा सुबोध अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से? जी सर। ठीक है, डेफिनेटली तुम्हारा अप्रेजल आने वाला होगा या फिर ईयर कंप्लीट होने वाला होगा, तो इस तरीके से वो करते हैं जैसे कि आप ये भी प्लान कर लो कि निकलना भी है या फिर अप्रेजल मत मांगो। जी बात यही सर। हाँ, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। ये कंपनियां ऐसे करती है, ठीक है। और जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लोगों को ये लगने लगता है कि इसके पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, इसकी वजह से ये यहीं पर स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो उस वजह से कोशिश करना चाहिए कि 2 साल 3 साल 3.5 साल में कंपनी चेंज कर देनी चाहिए, कितनी भी अच्छी कंपनी हो। डोंट लव योर कंपनी, लव योर जॉब, जो आपका वर्क है, ठीक है। चलो सबको गुड नाइट, बाय बाय एंड विल मीट टुमारो नियर, विल मीट मंडे। हाँ बोलो बोलो। सर ये बोल रहा हूँ कि जैसे मेरा तो कंप्लीट अभी नॉन टेक हो चुका है सर, मतलब एक 2-3 साल से मैं नॉन टेक्निकल फील्ड में आ चुका हूँ। पर मेरे को तो ऐसा कोई इशू जाएगा क्या, मतलब क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस भी नॉन टेक हो चुका है। करेक्ट, इशू जाता है, फर्स्ट कंपनी में इशू जाता है, ठीक है। जब क्या होता है कि अभी मैंने एक वॉच लिया हुआ है, ये कौन सी कंपनी का है, मुझे नॉइस कंपनी का है, ठीक है। ये वॉच है, ठीक है। अब ये वॉच है 3000 का, ठीक है। मैं वॉच का प्राइस नहीं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि वॉच का प्राइस क्या है 3000 है। तो जब ये 3000 का वॉच था तो मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन चेक किए थे, लोगों से फीडबैक पूछे थे कि भाई सही है कि नहीं। तो कुछ ऑफर में 3000 था, एक्चुअल प्राइस का सिर्फ 5000 दिखा रहा था। तो कुल मिला के जब मुझे ज़्यादा पैसे देने थे तो मैंने इसके रिव्यूज़ को चेक किए। लेकिन कभी तुमने सुना है कि 30 रुपए की वॉच हो या फिर 60 रुपए की वॉच हो तो तुम रिव्यू चेक करते हो क्या इतना ढेर सारा? तुम बताओ आंसर। नहीं, ठीक है। तो जब आप लोअर बजट में जाने को तैयार रहते हो तो कंपनी या फिर जिसका लोअर बजट है वो 10 चीज़ों को चेक नहीं करता है, वो कहता है एंट्री होने दो, इसके बाद देखेंगे एम्प्लॉय कैसा है। लेकिन जब कंपनी आपको बहुत ज़्यादा पे करेगी तब आपको एकदम चारों तरफ से वो देखेगी, ये फैक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है या फिर उसको अपना काम निकालना है क्योंकि उसको उसका बजट ही इतना है, ठीक है। अभी मैं यूनिक सिविल से हूँ, ठीक है। अभी हमारी कंपनी स्टार्ट हो रही है। अब मैं अगर किसी को 60,000 रुपये दे के हायर करूँगा ये मेरे लिए टफ होगा। तो मैं अगर 60,000 किसी को दिया भी तो इतना उसको चेक करूँगा कि मेरे से भी ज़्यादा उसको आता रहे, तभी जाके मैं उसको हायर करूँगा, तभी मुझे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर कोई आया और बोला कि सर मैं 10,000 रुपये में काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, डेफिनेटली मेरी कंपनी का बजट अगर उतना है तो मैं बोलूँगा यार 10,000 में तो बेचारा काम कर रहा है, इसको सिखा भी दूंगा, सिंपैथी आ जाएगी, सिखा भी दूंगा, थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से सेट भी कर दूंगा, जो जो रिक्वायरमेंट है वो मैं मैच करा दूंगा। लेकिन 60,000 रुपये में सिखाऊंगा ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि डेली का मेरा 2,000 रुपये का लॉस होगा अगर मैं सिखाने बैठ जाऊंगा। तो समझ गए आंसर? यस सर। ठीक है, तो यही आंसर है कि आपको अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, अपने नॉलेज से प्रूफ कर दो कि नहीं यार मैं टेक्निकल में ऐसा नहीं कि मैं वीक हूँ। और बिलीव करो आपका जो ये गुरुकुल चल रहा है, जो इंटर्नशिप चल रही है, इतना सीखने वाले हो यहाँ पर कि आपके इतना बोल सकता हूँ कि एक स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू में जो बैठोगे ना तो कोई आपसे डिबेट करेगा तो समझेगा कि कुछ आपने सीखा है, इतना मैं नॉलेज ऐड कर दूंगा।
तो ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप बता सकते हो कि भाई 4 मंथ इंटर्नशिप किया हुआ है, तो ऑलरेडी आप टेक्निकल वे में आ जाओगे। और ऑलरेडी आप लोग अभी केवल 5 क्लासेस किए हो, चेंज कर लो अपने आप को, देख लो कि 5 क्लासेस में कितना सीखा हुआ है। और आगे जब अभी मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस कम इजी पूछ रहा था, आगे टफ पूछूंगा, तो 10 क्लास 15 क्लास के बाद आपके पास बहुत नॉलेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो टेंशन मत लो, वो हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है मुझे। चलो, किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। देखो, मुझे ओवरऑल सबके सिलेक्शन से मतलब है, आप मुझसे जितना हार्ड वर्क कराओगे मैं रेडी रहूंगा उसके लिए, और उतना ही आप रेडी रहिए। आप देखिए, आप में से कई ढेर सारे से लोग हैं, आप लोग तो ग्रेट हैं कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। कुछ लोग कैसे हो गए, हेजिटेशन में पड़ गए होंगे कि यार ज्वाइन करूंगा, पता नहीं कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे फेस करूंगा, ठीक है। कुछ लोगों को लगा होगा अरे क्या होगा इंटरव्यू से, मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे सारे लोग, वो लोग अनसक्सेस हो जाते हैं। और जो लोग एकदम लगे रहते हैं, डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलती है, और उसमें से आप हैं, होप सो आपको डेफिनेटली मिलेगा। चलो, मंडे को मिलते हैं, 2 प्लान भेज हेलो। देंगे। हाँ जी, बोलो संदेश। सर आपने वो डायनेमिक इनपुट जो पूछा था उसके बारे में थोड़ा बता देंगे सर। डायनेमिक इनपुट जो होता है, वो कमांड को यूज करने से आपको लेंथ और आपका एंगल्स दिखता रहता है कि आप ड्राइंग में कितना लेंथ ड्रॉ कर रहे हो, कितने एंगल पे जा रहे हो, वो पूरा डायमेंशन शो करता रहता है ना। देखते हो 10 फीट डालते हो तो शो करता रहता है। तो वो ऑर्थो से जस्ट वाले एक डायनेमिक इनपुट होता है, उसकी वजह से होता है, वो उसका आंसर है। ओके ओके, चलो, प्लान 1 प्लान 2 आपको बनाना है। लेक्चर नंबर 12 वॉच करना है, केवल एक लेक्चर है और 2 प्लान बनाने हैं। प्लान में सेक्शन एलिवेशन दोनों है, सो कंफ्यूज मत होना, प्लान सेक्शन एलिवेशन दोनों करना है, मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट है, समेशन ड्राइंग एक तरीके से वो सबमिट करना है आपको। ओके, मैं भेजूंगा, 2 प्लान रहेंगे, प्लान 1 प्लान 2 नाम से 2 प्लान रहेंगे, दोनों का सेक्शन एलिवेशन भी रहेगा और प्लान भी रहेगा, ठीक है। ओके, चलो, सबको गुड नाइट।